Good evening, everyone. Myself is Divyang Shah, and whether my screen is visible on your computer or laptop, anyone can give the answer. हेमाली बहन हमारा स्क्रीन Yes, देखने मुझे. yes, visible. Okay, thank you. Done. So, the topic for the day is that we are moving towards the new act under the this is the Income Tax Act 2025. So now, as on today, the old act, that is Income Tax Act 1961, is not prevailing. So very basic query would have been there, if you are shifting from old to new, what change or other what procedural change as of now will be there. So how the old act still will be applicable and what procedure will be applicable. So for that, there is a one section is there, that section is 536 section is there, that I'm referring. So, first of all, 536 section, the Income Tax Act 1961 is hereby repealed. That is the first subsection of that section. Subsection 2 says, irrespective of the repeal of the Income Tax Act 1961 and subject to subsection 3. Now, this is relevant. Nothing shall affect the previous operation of the repealed Income Tax Act and orders or anything duly done or suffered thereunder. So, whatever have been done under the old Income Tax Act, that is the repealed Income Tax Act, that will still be valid. That cannot be challenged, it is already done. That is the first clause of subsection 2. Second thing, nothing shall affect any right, privilege, obligation, or liability acquired, accrued, or incurred under the repealed Income Tax Act. So let me take an example. For example, for 2020, we have applied for Vivasya Vishwas scheme under 2020 scheme or 2024 scheme as well. If that is completed because of the new act, that cannot be challenged because that right is acquired under that particular scheme. So anything, for example, any liabilities created under the old act, that will still prevail. That will not be wiped out, obviously. So that is the clause number B. My humble request, if anyone having a doubt or any query, they can post your query in the chat box. So moving to next. Clause number C. This is something important. What does this says? The provision of the repealed Income Tax Act shall continue to apply to any proceeding pending on the date of commencement of this act. So when this act is commenced on 1st of April 2026. So on this date, if anything is pending, any proceeding is pending under the old act, in that and to any proceeding initiated on or after the 1st of April 2026, including notices, assessment, reassessment, April 2026 or then after, any proceeding is initiated under the old act. So that proceeding will be as per the old act. So let me take an example. If assessment year 24-25, that can be reopened up to 3 years or 5 years. So after within a 5 years, that is the up to 31st of March 2030, that reassessment is initiated for assessment year 25-26. So whether that will be governed under the old act, answer is yes. Whatever procedure is there, that will be as per the old act. Is that clear? That part? Now, so there are chances that after 5 years or 10 years down the line, that reassessment is still going on. Because in case of search, they can open the 10 years. So if that assessment year is before, that assessment year is assessment year 26-27 or earlier year. Because if I'm referring assessment year 26-27, that pertaining to previous year 25-26, that is covered under the old act. So assessment year 26-27 or earlier year proceeding is there, then it will be go as per the old act. Next. Clause number D. Any proceeding for the imposition of a penalty in respect of any tax year beginning before 1st of April 2026 may be initiated and any such penalty may be imposed under the repealed Income Tax Act as if this act has not been enacted. This act matlab naya act. It is a new act. So what they say is, if any penalty proceeding is there for previous year 25-26 or earlier years, that penalty proceeding will be conducted as per the old act.
So let me take a scenario that, for example, previous year 25-26, which is governed by the old act. So assessment year 26-27, assessment order is passed by 31st of December 2027, and then after assessment order, addition is made, appeal is filed, first appeal disposed of, addition is confirmed, again second appeal in the tribunals filed, and tribunal also confirm the addition. Let me say tribunal passed the order somewhere in 2032, and then after that order, because of that order, now penalty can be initiated for that assessment year. Answer is yes, because for time being, when appeal was pending till tribunal, assessing officer keep the penalty proceeding in abeyance, because once a ITAT order is received by the assessing officer, he can levy the penalty later on. So he kept the penalty proceeding abeyance till the 2032. That is the year in which tribunal passed the order. So in 2032, assessing officer wanted to levy the penalty. Penalty for which year? Assessment year 26-27, which is governed by the old act. So that penalty also shall be levied as per the old act, not as per new act. So in short, logic is if something is pertaining to assessment year 26 or 27 or earlier year, that will be governed by the old act. That is simple thing. If something is covered by previous year or tax year 26-27, tax year means this is a under the new act, instead of previous year they are using the tax year. So if a tax year 26-27, I'm referring as per the old act, it is a previous year 26-27 or assessment year 27-28. All are same. So if anything, any penalty or assessment order, any proceeding is pertaining to tax year 26-27, that will be covered by the new act. Okay, moving to next. Clause number E, any proceeding on the commencement of this act before any income tax authority or any other authority constituted under the repealed income tax act, appellate tribunal or any court by way of application, appeal, reference, revision or by any other means shall be continued, disposed of as if this act had not been enacted. Means this new act has not been enacted and old act is still prevailing. That's what they mean. So if any proceeding is in appeal, so let me say some matter reached to high court, and that is assessment year 25-26, and by the time matter reached to high court, it is a year is 2035. On 2035 year, that appeal is pending in high court. So that high court proceeding will be conducted, and all the law will be governed as stated in the old act, that is the Income Tax Act 1961. That's what this clause means. In short, same logic. If any proceeding is pertaining to assessment year 26-27 or earlier year, that shall be governed by the old act. That's a common logic we can apply. Clause number F, that is something really important. Any election or declaration made or option exercised by an assessee under any provision of the repealed Income Tax Act and in force immediately before the commencement of this act. Matlab, before this new act came into picture, that declaration, election or option was still in force, shall be deemed to have been an election or declaration made or option exercised under the corresponding provision of this act. So let's take an example. Under the new regime, section 115 BAC, if we wanted to go for the old regime, we have to file an application. We have to exercise the option. So under the old act, we have exercised that option. So under the new act, we need not to exercise that option again if the provisions are identical. Okay, if in the new act also it is a mention, okay, if once you have exercised the option, that option shall be valid for subsequent year. If that is a provision, then the option exercise under the old act still will be valid under the new act. Or we can say under the new act you need not to exercise the option again. Am I clear? Same goes for any declaration you have filed under the old act. It will be valid under the new law as well if the provisions are identical. Going to next. Now, there is something interesting. Now, what this clause G says, this clause G says, simple, if any refund is due, and that refund is due for assessment year, which is governed by the old act. That is assessment year 26-27 or earlier year. And that refund is granted after 1st of April
2026. So let me say that refund is granted on 31st of December 2026. So what will be interest? Which interest rate will be applicable? So this clause says up to 31st of March 2026, the interest rate will be applicable as given in the old act. But after 1st of April 2026, interest rate given in the new act will be applicable. So let me say in the old act interest rate is 1%, in the new act interest rate is 1.5%. So from 1st April 2026 to 31st of December 2026, the date on which refund is granted, the new interest rate will be applicable. Same goes for the interest payment. So let me say we have made any default under the old act, and because of that default we have to pay some interest, and interest has to be counted, for example, after 1st of April 2026 as well. So let me say I need to pay interest up to 31st of December 2026, because on that day I paid the due amount along with the interest. So from 1st April 2026 to 31st of December 2026, whatever interest is applicable, that will be as per the new act. So in the new act, interest rate is mentioned 1.5% per month. That will be the interest rate. Am I clear? So I'm just giving a crux. If interest is due for any assessment year, interest is due under the old act. Refund is due under the old act. Then that on that refund, interest rate will be applicable as per the new act for that period which is falling after 1st of April 2026. If any period is falling before 1st of April 2026, it will be as per the old act. Am I clear? Any doubt or any query? Any queries there for this part? Okay. Done. Moving to next. So now clause number H I am referring. Okay, that is interesting. Clause number H, I'm just taking example. Let me say under section 54, I can take the exemption from the capital gain. So I had a long-term capital gain because sale of the house property. And if I purchase or construct the house property within 2 years or 3 years, then the whatever capital gain is there on that, I need not to pay the tax. So assessment year 26-27, capital gain, long-term capital gain. There is a long-term capital gain of 10 lakh. I need to invest 10 lakh in the new house or need to construct the house. But time period is higher, that is 2 years or 3 years. So before filing the return, that is 31st of July 2026, I need to pay that amount into capital deposit scheme. So I deposited the amount into the capital deposit scheme. Now, if I construct the house or purchase the house from 10 lakh, there is no consequences. But I failed to construct or purchase the house. So the year in which the period expired, that is construction time period is 3 years. So the year 3 years expire in that year, that long-term capital gain will be again be my income. And in that year, I need to pay the tax. So 3 years, let me say, is expiring in 28, 29, 20, 20 assessment of 2029, 2030 is the year in which 3 years is expiring. So in that year, my income will be there, yes. So it will be added in the new act as per the same way which old act has said. So in the after 3 years expired, so assessment at 29 and 29, 30, the long-term capital gain will be my income if I am not able to spend the 10 lakh as per the provision of the old act. Okay, so in short, what you have to learn, if this new and old act has not been there, this transition has not been there, what would have been done under the old act? The same way it will be taxed. So whatever deduction or exemption we have claimed under the old act, and that deduction or exemption is will be taxed again because of non-compliance of few condition, then that will be taxed in the year and in the same way as mentioned in the old act. So let me say under the old act it is said कि 3 years के बाद taxable होगा, तो ऐसे होगा नए act में भी, and उसमें लिखा था कि it will be taxed as a long-term capital gain. So it will be taxed accordingly in the new act as well. Am I clear? So clause number G said they were in respect of any proceeding relating to any tax year beginning before 1st April, refund is due or default is made for which we need to make a payment.
Then provision of the repealed Income Tax Act relating to interest payment by the central government or refund or interest payable by the assessee for default shall apply for the period on or after such date. Such date मतलब 1 April 2026 subject to effect that, मतलब यहां पर ऐसा कह रहा है कि भाई अगर रिफंड है, रिफंड अगर आगे के साल का है, द रिफंड बिलोंग्स टू दी असेसमेंट ईयर 26 27 और अर्लियर ईयर और इट इज कवर्ड बाय द ओल्ड एक्ट, देन ओल्ड इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल, डजंट मैटर वेयर द टाइम पीरियड फॉल्स. So after 1st April 2026 का इंटरेस्ट है, still the old interest will be applicable, but subject to effect that, what is the amendment? The rate of interest on refund or on the default as the case may be as provided in the rate of interest on refund or on the default as the case may be as provided in the repealed Income Tax Act has been substituted with the rate as provided in the corresponding provision of this act. तो मतलब पुराने और नए एक्ट में आई थिंक रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी सेम, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से. जस्ट अ मिनट, अगेन आई विल लाइक टू रीड. ओके, सो मतलब ये ऐसा कह रहा है कि भाई नए एक्ट में जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट अगर पुराने एक्ट में कर दिया है ना, तो वही देन द ओल्ड एक्ट इंटरेस्ट विल बी एप्लीकेबल. So that's complicated. पता नहीं किया है कि नहीं किया है, वो हमें चेक करना पड़ेगा because of the amendment. And such substitution shall apply from the date on which such rate has been modified under this act. मतलब यहाँ ऐसा कह रहे हैं कि भाई नए एक्ट में जो इंटरेस्ट रेट है तो वही रेट पुराने एक्ट में भी कर दिया है. अगर आंसर इज यस, देन पुराने एक्ट में जो इंटरेस्ट लिखा हुआ है that interest will be applicable even after 1st of April 2026 for those refund which are belong to the old act. That's what they are trying to say. सर मेरे हिसाब से वो ये बोलना चाहता है कि अगर रिफंड ऑन इंटरेस्ट है या तो फिर पेएबल है, तो रेट जो इनकम टैक्स रिपील्ड जो हो गया ना, उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा विद द रेट ऑफ न्यू एक्ट, ऐसा मुझे लगता है. Provide subject to effect that the rate of interest on refund or on the default as the case may be as provided in the repealed income tax has been substituted the rate as provided in the corresponding provision of this act. हाँ, yes, agree with the interpretation, agree. And such substitution shall apply from the date on which such rate has been modified under this act. बट बी का क्या कहना है, बी के कॉन्टेक्स्ट में? मतलब जिस दिन से हमने नोटिफाई किया ना, तब से ये रेट एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर सपोज करिए कि जैसे एक्ट आया, उसके बाद अपने ने नोटिफाई कब किया, नोटिफाई जब से किया तब से ये अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो जाएगा. अगर 25 अप्रैल को किया तो 25 अप्रैल से वो रेट चेंज हो जाएंगे. ऐसा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो आगे के पीरियड में पुराना रेट अप्लाई होगा. तो इंटरप्रिटेशन तो यही बोल रहा है, बाकी कुछ कॉम्प्लेक्स है. एक काम करते, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा अभी स्किप करते हैं, ठीक है ना, फॉर दी एवरीवन जिसको बेनिफिट मिलेगा ना, वही टॉपिक जल्दी कवर करते हैं. क्लॉज नंबर एच आई एम रिफरिंग, जो ऑलरेडी रिकवर हो गया है. Where any sum has been allowed as a deduction, ये ऑलरेडी कवर हो चुका था 54 के कॉन्टेक्स्ट में, मैं वापस रीड कर रहा हूं because that is amended. Where any sum has been allowed as a deduction or has not been included in the total income of any person, so they are talking about deduction or exemption, either on account of fulfillment of certain condition or for any other reason for any tax year beginning before 1st April 2026. मतलब पुराने एक्ट में कवर हो रहा है वो डिडक्शन और एग्जेम्पशन. And such sum was required to be included in the total income of any subsequent year, tax year, including beginning on or after 1st of April 2026. मतलब नया एक्ट कब से पिक्चर में आ रहा है? From 1st of April 2026. मतलब टैक्स ईयर कौन सा है? 26-27, जो प्रीवियस ईयर के कॉन्टेक्स्ट में रिफर हो रहा है. अंडर द रिपील्ड इनकम टैक्स एक्ट. ये थोड़ा डाउटफुल, एक मिनट. Included in the total income of any subsequent tax year, including the beginning on or after the 1st of April 2026, under the repealed Income Tax Act, if it had not been so repealed on account of violation of such condition or for any other reason, then such sum shall be deemed to be the income of such subsequent tax year and included in the total income of the said person under the same head of income as it would have been included under the repealed Income Tax Act. I think पुराने और नए में आई थिंक उन्होंने सिर्फ वर्डिंग चेंज किया हुआ है, बट जो हमारा इंटरप्रिटेशन है ना, दैट विल बी सेम.
इंटरप्रिटेशन क्या है, दैट 54 में अगर एग्जेम्पशन लिया है एंड बिकॉज ऑफ सम कंडीशंस आर वायोलेटेड, वो बाद में टैक्स होने वाला है, तो बाद में ऐसे ही टैक्स होगा जैसे पुराने एक्ट में हो रहा था, बट द ईयर जो नया होगा वो नए एक्ट के ईयर में कवर होगा, दैट्स इट। ठीक है सैंकी, कोई इसमें चेंजेस, कोई ऑब्जर्वेशन? नहीं सर, मैं ये पढ़ा ही नहीं हूँ, अभी आपके साथ ही पढ़ रहा हूँ। ठीक है डन। तो चला गो टू आई। आई थिंक बाकी था ना? हाँ आई से बाकी था। जस्ट अ मिनट, इज दैट विजिबल नाउ? So now, any sum payable under the Repealed Income Tax Act may be recovered under this act without prejudice to the any action already taken for the recovery of such sum under the Repealed Income Tax Act. मतलब अगर आपका कोई पैसा ड्यू है अंडर इनकम टैक्स एक्ट में, पुराने एक्ट में, तो दैट कैन बी रिकवर्ड एज पर द न्यू एक्ट एज वेल। तो न्यू एक्ट में जो भी प्रोविजन है उस हिसाब से वो रिकवरी कर सकते हैं, दैट्स इट। डजंट मैटर दैट ड्यू बिलोंग टू द ओल्ड एक्ट, दैट्स व्हाट आई सेज। क्लियर? नेक्स्ट क्लॉज नंबर जे, ये तो ऑलरेडी कवर हुआ था ना आपने? अच्छा ये कवर, व्हाटएवर, चलिए आगे। ये जे कवर हो गया था टॉपिक, अपॉइंटमेंट अप्रूवल नहीं, ये नहीं हुआ था। ठीक है डन। सो क्लॉज नंबर जे, एनी अग्रीमेंट एंटर्ड इनटू, अपॉइंटमेंट मेड, अप्रूवल गिवन, recognition granted, circular direction, instruction, notification, order or rule or any scheme framed therein issued under any provision of the repealed income tax act, मतलब old act, shall, so far as it is not inconsistent with the corresponding provision of this act, be deemed to have been entered into, made, granted, given or issued under the corresponding provision of this act and shall continue in force accordingly. तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल पुराने एक्ट में अंडर सेक्शन 1023 में कोई अप्रूवल मिलेगा, देन ओनली वी कैन टेक द एग्जेम्पशन। आई एम जस्ट टेकिंग अजम्पशन हो कि पर्टिकुलर सेक्शन में कोई अप्रूवल मिला तो ही ये वैलिड होगा। तो वो अप्रूवल मिल गया है पुराने एक्ट में, नए एक्ट में प्रोविजंस आर सेम, आइडेंटिकल, यस, देन दैट अप्रूवल विल बी वैलिड अंडर द न्यू एक्ट एज वेल। दैट इज द फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, पुराने एक्ट में कोई अपॉइंटमेंट किया था, अपॉइंटमेंट ऑफ एनी अथॉरिटी और मे बी एनीथिंग, सो एवरीथिंग विल बी वैलिड अंडर द न्यू एक्ट एज वेल। फॉर एग्जाम्पल पुराने एक्ट में अग्रीमेंट हुआ था, अग्रीमेंट फॉर द ट्रांसफर प्राइसिंग, द सेफ हार्बर रूल्स के लिए या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कोई अग्रीमेंट हुआ था, तो द सेम अग्रीमेंट विल बी वैलिड फॉर अंडर द न्यू एक्ट एज वेल। Okay, now giving another example, for example, if there is a return and the return is not filed and for that year there is a refund or there is a loss, so let me say refund is there, so time limit to file the bill later return is also expired, so can we claim the refund? Answer is yes, because some circular under section 119 2B was issued in 2015 एंड अर्लियर एज वेल, जो बाद में अमेंड हुआ था कि 6 साल तक आप रिफंड क्लेम कर सकते हो बाय आस्किंग फॉर द कंडोनिंग द डिले इन फाइलिंग द रिटर्न। वंस दैट डिले इज कंडोन्ड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, यू कैन फाइल द रिटर्न एंड यू कैन आस्क फॉर द रिफंड। सो नाउ दैट सर्कुलर वाज इश्यूड अंडर द ओल्ड एक्ट, तो नए एक्ट में वो सर्कुलर इश्यूड हुआ है? आंसर इज नो। प्रोविजंस में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है? आंसर इज नो। दैट सर्कुलर विल बी स्टिल बाइंडिंग अंडर द न्यू एक्ट एज वेल। That's what my interpretation is. Okay? यहाँ नोटिफिकेशन और ऑर्डर लिखा हुआ है। अब ऑर्डर किसका है, सीबीडीटी का है या फिर कोर्ट का है, तो यहाँ क्लैरिटी नहीं है। सो इफ वी अंडरस्टैंड कि ऑर्डर मतलब कोर्ट का ऑर्डर्स भी आ गए और प्रोविजन सेम्स है पुराने एक्ट में और नए एक्ट में, then that judgment will be still binding under the new act as well. That's one of the interpretation. No? Is that clear? कोई डाउट इस कॉन्टेक्स्ट में? Moving to next. Now, what is the clause number K is saying? Let's read out first of all. Where the period provided for any application, appeal, reference or revision under the Repealed Income Tax Act had expired on or before the commencement of this act. तो एक काम करते हैं अपने, फॉर एग्जांपल रिवीजन की एप्लीकेशन कर सकते हैं विद द कमिश्नर। इसमें टाइम पीरियड 2 साल है, तो 2 साल का टाइम पीरियड ऑलरेडी 31st of March 2026 के पहले एक्सपायर हो गया। आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल। Nothing in this act shall be construed as enabling any such application, appeal, reference or revision to be made under this act
by reason only of the fact that a longer period of therefore is prescribed or provision is made for extension of time in suitable cases. So अपने नए एक्ट में ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि 4 साल दिए हुए हैं in the new act. So whether under the new act you can make an application of revision for the old provision, old assessment year, answer is no. You cannot, just because that time period was already expired under the old act. Let me take another scenario कि reassessment करना है, तो reassessment के लिए old act में और new act में time limit same है, but I'm just changing a fact. तो पुराने एक्ट में टाइम लिमिट थी 3 साल और नए एक्ट में 10 साल है. सो नया एक्ट आने के बाद पुराने असेसमेंट ईयर ओपन कर सकते हो जिसका टाइम पीरियड ऑफ 3 years इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड बिफोर 31st of March 2026. आंसर इज नो, यू कैनॉट रीओपन दैट असेसमेंट. इज दैट क्लियर? वो सिंपल है कि जिसकी टाइम लिमिट ऑलरेडी ओवर हो चुकी है तो उसके बाद अमेंडमेंट आने के बाद वो टाइम लिमिट वापस रिवाइव नहीं हो सकती. दैट्स द लॉजिक इज. नाउ आई एम नॉट रीडिंग दिस पार्ट, उसका कंक्लूजन क्लॉज नंबर एल का अमेंडमेंट होने के बाद भी मैं चेंज वापस नहीं पढ़ रहा हूं. तो लॉजिक इसमें वही है कि भी अगर इफ देयर इज अ मैट क्रेडिट और एएमटी क्रेडिट जो पुराने एक्ट में है अवेलेबल, तो पुराने एक्ट में कितने टाइम पीरियड के लिए अवेलेबल है? फॉर एग्जांपल 8 साल, तो इसमें 2 साल खत्म हो चुके हैं, तो बाकी के 6 साल के लिए आपको नए एक्ट में वो कैरी फॉरवर्ड करने मिलेगा. दैट्स व्हाट द लॉजिक वुड हैव बीन. आपको रीड करना है, जस्ट रीड इट. मैं भी चेक कर लेता हूं. अमेंडमेंट क्यों किया होगा? जस्ट बिकॉज दे मे नॉट हैव गिवन अ प्रॉपर रेफरेंस, उसके लिए शायद अमेंडमेंट हो, बट इंटरप्रिटेशन इज सेम. अगर पुराने एक्ट में 8 साल के लिए अलाउड था, 2 साल पुराने एक्ट में खत्म हो गया क्रेडिट के लिए, तो नए एक्ट में 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशंस एज गिवन इन दी ओल्ड एक्ट एंड न्यू एक्ट एज एंड व्हेन अप्लाई, एज एंड व्हेन एप्लीकेबल. डन. मूविंग टू नेक्स्ट. ये लॉस वाला है. लॉस का एक पहले कंक्लूजन दे देता हूं कि लॉस में क्या हुआ है कि वॉट एवर लॉस वॉज अलाउड टू बी कैरीड फॉरवर्ड अंडर द ओल्ड एक्ट. तो फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट्स एंड गेन्स है, उसका लॉस है, तो वो लॉस कितनी अमाउंट का है? 1 करोड़ का. कौन से साल का है? 23-24. तो वो 8 साल तक अलाउड है. सो 25-26 2 साल तक पुराने एक्ट में कवर होगा और बाकी के 6 साल के लिए आप नए एक्ट में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. आंसर इज यस. द सेम थिंग इज मेंशन ओवर हियर. ठीक है. सो द सेम थिंग इज मेंशन. तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आई एम नॉट रीडिंग द प्रोविजन, you can go through by yourself. I'm just giving a 1 minute. Moving to next page. House property, PGBP income, speculation business, specified business, जो आई थिंक 35 AD का होगा. एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. यहाँ अभी तक वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल इनका नहीं आया ना, वो नीचे आ रहा है. और कोई रह गया इसमें? एनी लॉस इज मिस्ड आउट टू मेंशन ओवर हियर? सैलरी में लॉस होगा नहीं. हाउस प्रॉपर्टी लॉस आ गया, पीजीबीपी लॉस आ गया. पीजीबीपी में दोनों लॉस आ गए, स्पेकुलेटिव एंड एज वेल एज द नॉर्मल लॉस. वो वही सेक्शन में कवर होता होगा. दैट्स व्हाट आई एम अज्यूमिंग. स्पेसिफाइड बिजनेस 35 AD का लॉस आ गया. एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, कैपिटल लॉस नीचे एंड में लिखा हुआ है. और अदर सोर्सेज में आई थिंक लॉस आएगा नहीं एक्सेप्ट दिस एक्टिविटी. ठीक है. डन. मूविंग टू नेक्स्ट. क्लॉज नंबर एन. क्लॉज नंबर एन में क्या लिखा हुआ है? एनी अमाउंट ऑफ लॉस अंडर द हेड कैपिटल गेन. सेम लॉजिक. शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है. पुराने एक्ट में वो लॉस हुआ था, सो पुराने एक्ट में जो लॉस हुआ था वो नए एक्ट में भी कैरी फॉरवर्ड होगा. इफ दैट लॉस इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 years, पुराने एक्ट में 1 साल तक कैरी फॉरवर्ड हुआ है, तो नए साल में इट विल बी अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड फॉर 7 years. सिंपल. द सेम इज मेंशन ओवर हियर. वापिस मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम जस्ट गोइंग टू नेक्स्ट.
अमालगमेटेड कंपनी के केस में जो सेट ऑफ फॉर डेप्रिसिएशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में स्किप कर रहा हूँ। ये कोऑपरेटिव बैंक के केस में अगर मर्जर हुआ है तो उसमें लॉस जो हुआ है डेप्रिसिएशन उसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोविजन है। इट इज नॉट वाइडली एप्लीकेबल, तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल। सो ये क्या है? Under section 47, different clauses are available which says that if these conditions are fulfilled, the transfer of assets will not be termed as a transfer, and that is why there won't be any capital gain. For example, proprietorship firm is converted into company, LLP is converted into company, gift is given. So those all are not transfer. So in that cases, if few conditions they have to fulfill, अगर वो condition fulfill नहीं हुई, then in that case the year in which that condition is violated उस साल में आपको वो ट्रांसफर गिना जाएगा, and in that year you have to pay the capital gain tax. So वो साल फॉर एग्जांपल 3 साल के बाद वायलेशन हुआ तो वो आ रहा है आपका टैक्स ईयर 27-28, तो उस साल वो टैक्सेबल होगा as per the provision of the old act. That's what they have mentioned over here. Is that clear? Shall I go to next? आर ये है आई थिंक डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन के कॉन्टेक्स्ट में होगा। ये स्पेशल डिडक्शन है, सेम प्रोविजन। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट। क्लॉज नंबर टी, ये है क्रेडिट बैलेंस इन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो अपने जो इन द फ्यू केसेस few assessee who are banking or NBFC, they are allowed to have the provision for bad and doubtful debts, and that provision will be allowed as a reduction. तो वो प्रोविजन अगर बच गई है तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड होगी नए एक्ट में और उस तरह आपको डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, सेम वे। तो मतलब अगर ये एक्ट चेंज नहीं हुआ है फ्रॉम ओल्ड टू न्यू तो कैसे ट्रीटमेंट मिलेगी? वही ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है। क्लॉज नंबर यू, any scheme which has been notified under the provision of the Prepaid Income Tax Act with a view to eliminating the interface with the assessee or any other person, the said scheme shall be deemed to have been made under the corresponding provision of this act. मतलब पुराने एक्ट में अगर फेस टू फेस इंटरेक्शन खत्म करने के लिए जो स्कीम थी, फेसलेस असेसमेंट स्कीम, फेसलेस अपील स्कीम, फेसलेस अपील्स पेनल्टी स्कीम, जो सारी स्कीम है ना, those all schemes will be deemed to be notified under the new act. Okay, so referring the last one, where a search has been initiated under section 132 or requisition is made under section 132 prior to the commencement of this act. मतलब सर्च कब हुआ है? Before 1st April 2026. The provision of the repealed income tax act shall continue to apply. मतलब if a search has been conducted before 1st of April 2026, then old act provision will be applicable. So everything, search related, assessment, penalty, appeal, which tax rate will apply, how the immunity will be granted, every provision will be of the old act. That's what they have mentioned over in the clause number V. Now, this everything is subject to clause number 4. Subsection 4. Subsection 4 में क्या लिखा हुआ है? Without prejudice to the provision of subsection 2, the provision of section 6 of general clause of 1897 shall apply with regard to the effect of the repeal. Basically, these are the general clauses. अगर कोई word define नहीं किया हुआ है, then definition of that can be retrieved. Definition of that word can be retrieved from this act. That's it. So it is not much important. Subsection 3 क्या कहा गया हुआ है? Where any reference is made in this act to any tax year commencing on the 1st of April 2026. ये क्या? अच्छा, ये एक्ट में ना कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है? टैक्स ईयर इंस्टेड ऑफ प्रीवियस ईयर. So whenever in this act they are referring tax year commencing on 1st April 2025, तो उसका मतलब क्या हुआ? Previous year 25-26. That's how we need to read this act. ठीक है, done. That's it. So how we can segregate or conclude this part? Whatever under the old act was there, that will continue under the new act. So there is no much change. तो अगर नहीं भी पढ़ा होता तो हम कैसे बिहेव करते भाई कि भाई जिस तरह पुराने एक्ट में कंटिन्यू है वही कंटिन्यू होगा. दैट्स द वे दिस ट्रांजिशनल प्रोविजन विल वर्क. हाँ, अगर आपको है ना ये क्वेश्चन है कि भाई ये अभी असेसमेंट ऑर्डर है, अभी पास हुआ 26-27 में, तो उसमें अपील करनी है तो कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा? तो वो असेसमेंट ऑर्डर है वो कौन से एक्ट में पास हुआ है? पुराने एक्ट में, तो पुरानी प्रोविजन. मैं क्लियर? ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई 1st of April 2026 से पहले कोई ऑर्डर पास हुआ है पुराने एक्ट में, फॉर एग्जांपल
रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 12A वाज रिजेक्टेड अंडर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट, कि उसके सामने अपील करनी है, अपील आज कर रहे हैं, पर वो ऑर्डर कहां पास हुआ था, पुराने एक्ट में, देन द न्यू फॉर्म विल नॉट बी एप्लीकेबल, बट द अपील फॉर्म विल बी एप्लीकेबल एज गिवन इन द ओल्ड एक्ट, दैट इज द फॉर्म नंबर 36 टू ट्रिब्यूनल. इज दैट क्लियर? फॉर टीडीएस पेमेंट, अगर टीडीएस अगर आप नए एक्ट में कर रहे हो तो नया फॉर्म, अगर पुराने एक्ट में टीडीएस पेमेंट या उसका टीडीएस रिटर्न कर रहे हो तो पुराना फॉर्म एप्लीकेबल होगा. दैट्स व्हाट द कंक्लूजन इज. इज देयर एनी क्वेरी फॉर दिस पार्ट? वो 132 में जो बोला हाँ लास्ट लास्ट शायद HIJ वाला कौन सा था, उसमें ये बोला ना 132 में रिक्विजिशन भी कंप्लीट होना पड़ेगा 132A में. हाँ अगर रिक्विजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे 132A में सर्च चालू हो गई बट रिक्विजिशन 132A का बाद में कंक्लूड हुआ, हाँ अप्रैल के बाद, तो हाँ नया एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा ना फिर. हाँ. यस यस यस, अग्री. इसमें कभी क्या होता है, रिक्वेजिशन बेसिकली क्या होता है, सेक्शन 132 में क्या है, दो सेक्शन 132 के दो पार्ट है. बिल्डर के वहां रेड हुई, तो बिल्डर हम्म. के वहां है तो उसका सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड हुआ, तो वो सेटिस्फेक्शन तो उसका कॉन्टेक्स्ट यहाँ नहीं दिया गया है. रिक्वेजिशन कौन सा केस है, फॉर एग्जांपल रास्ते में किसी की पुलिस को किसी की कैश मिल गई, वो कैश किसकी है, फॉर एग्जांपल मेरी है. सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विल आस्क द रिक्वेजिशन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट के भी ये कैश हमें दे दीजिए, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिक्वेजिशन आपका 132A होगा. ओके, मतलब 132 सर्च चालू हो गई तो चालू अगर मार्च से पहले हो गई, मतलब 31 मार्च में चालू हुई, 31 मार्च में, तो ओल्ड एक्ट तो में फिर कवर वो होगा. पुराने ओल्ड एक्ट में. अगर रिक्विजिशन कुछ किया है तो वो 30, तो वो जब हुआ तब से. यस यस, ओके रिक्वेजिशन मोस्टली किसी केस में होता नहीं है. ओके. वी हैव सीन अ वेरी लेस केसेस. हाँ, सर्च हो गई 31 मार्च 2026 को, और उसमें वहां डॉक्यूमेंट्स कुछ मिले हैं सेंकी के और दिव्यांग के, तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर किए, हमारे असेसिंग ऑफिसर ने सेटिस्फेक्शन नोट रिकॉर्ड की कि ये डॉक्यूमेंट्स है ना सेंकी और दिव्यांग के, तो दिव्यांग का असेसमेंट भी शुरू होगा, तो वो सेटिस्फेक्शन नोट तो बाद में रिकॉर्ड हुई. तो उसके केस में, उस केस में नया एक्ट लगे या पुराना एक्ट, उसके लिए कोई क्लैरिटी है नहीं अभी तक. ठीक है सेंकी? ओके, सामने वाले का क्या होगा वो नहीं पता है. ठीक हाँ, है. वो अभी तक क्लैरिटी नहीं है अभी तक. ठीक. ठीक है ना? So, ओके. shall we end the session? Any suggestions are there for this thing? Any suggestions are there? You can give it to me on my number. Hope that it is available, or I am just posting my mobile number into chat box. Done. Thank you, everyone. थैंक यू. 987